Hello, friends. Good afternoon. Today, the topic on which I want to talk with you is regarding the emergency provisions which our own Constitution of India provides. And these emergency provisions are incorporated in Article 352 onwards. आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने जो प्रोवाइड किए हैं आर्टिकल 352 की शेप में उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर आर्टिकल 352 को इन्वोक करते हुए कोई भी गवर्नमेंट जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट वो प्रोक्लेमेशन करती है इमरजेंसी तो हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि गलत ठहराना जो है say for example if you say that the government the state has misused these emergency provisions and for example if this emergency is proclaimed by cabinet through president of India is wrong then such power is vested in the courts constitutional particularly the Supreme Court of India. So अगर इमरजेंसी लगाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को एक्सरसाइज करते हुए किसी भी गवर्नमेंट के दौरान और अगर जो हमारे सिटीजन्स हैं वो फील करते हैं कि ये इमरजेंसी गलत लगाई गई नहीं होनी चाहिए तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए कोर्ट में जा सकते हैं क्योंकि 44th जो अमेंडमेंट हुई थी 1978 उसमें ये वाला जो प्रोविजन है जुडिशियल रिव्यू का बाय कोर्ट्स इट वाज रीइंफोर्स्ड तो ये पावर्स जो है कोर्ट के पास है और जब ये 42nd जो अमेंडमेंट हुई थी तो जुडिशियल रिव्यू की पावर को टेक अवे किया गया था जो 44th अमेंडमेंट ने रीइंफोर्स की उस वक्त जो पावर इसके रिव्यू की जो पावर थी उस वक्त पार्लियामेंट में 1975 की हम बात पार्लियामेंट में वेस्ट थी तो हम किसी भी तरीके से ये बात नहीं कह सकते कि 1975 में जो इमरजेंसी जो मिसिज इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त उनके द्वारा जो लगाई गई थी
गवर्नमेंट के द्वारा वो गलत थी, या उसको हम काला धब्बा बोलें, ब्लैक स्पॉट बोलें, क्योंकि गवर्नमेंट ने चाहे जैसे भी पावर को एक्सरसाइज किया, वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में थी, तभी ही गवर्नमेंट ने उसको एक्सरसाइज किया। तो हम ये चीज देखने की कोशिश करते हैं, एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं, वो सिचुएशंस क्या है जिन सिचुएशंस में कोई भी जो गवर्नमेंट है उस वक्त की या इस वक्त वो इमरजेंसी प्रोविजंस का यूज करते हैं। तो जब हम आर्टिकल 352 को एग्जामिन करें, वो सिचुएशंस under which the proclamation of emergency can be made are very well defined, laid on. और अगर वो सिचुएशंस मीट आउट नहीं हो रही हैं, तो से फॉर एग्जांपल आज की गवर्नमेंट अगर इसका मिस यूज करती है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बाय वर्च्यू ऑफ 44th सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है जुडिशियल रिव्यू, दैट लाइज देयर, it can be assailed, it can be challenged straightway in the apex court of India, that is Supreme Court of India. And such exercise of power are blatant, whether latent exercise or misuse of that power, constitutional power. It is subject to the judicial review. तो मैं आपको आर्टिकल 352 में से ब्रीफली वो चीज बताना चाहता हूँ, सर्कमस्टांसिस जो है वो कौन से हैं जिसमें इमरजेंसी जो है जो कैबिनेट है वो रिकमेंड कर सकती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट, ऑफ विच द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। तो वो सर्कमस्टांसेस जो हैं आर्टिकल 352 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ले डाउन है। मैं पहला पढ़ता हूँ कि आर्टिकल 352, if the president is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or armed rebellion. तो ये बिल्कुल क्लियरली it has been laid on Article 352. If these three circumstances, first, satisfaction of the president is with respect to कि कोई भी ग्रेव इमरजेंसी, इस तरह की सीरियस इमरजेंसी जो है
आसपास मंडरा रही है, एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमारी स्टेट की सिक्योरिटी को या हमारे मुल्क की किसी एक टेरिटरी, किसी एक हिस्से की सिक्योरिटी को वो थ्रेटन कर रही है, वार्न कर रही है। तो और वो किस तरह वो थ्रेटन कर रही है, वो कौन सी पहली सिचुएशन है, जैसे वार की सिचुएशन हो सकती है, वार लाइक सिचुएशन हो सकती है, किसी किस्म का एक्सटर्नल अग्रेशन हो सकता है, और आर्म्ड रेबलियन जो है वो हो सकती है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो आर्म्ड रेबलियन है, ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा was placed in the constitution. Prior to this, uh, there was internal disturbance. तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह armed rebellion came into being by virtue of 44 to the constitution. So these are the three situations whereby the cabinet may recommend to the president of India that such grave situation is subsisting, which is threatening to the security of the state or any part, any territory of the state. Under such circumstance, if the president is satisfied, then the president may proclaim emergency. So, what I'm trying to communicate to the public is that emergency provision is existing, subsisting within the constitution of India. Our forefathers has incorporated while framing the constitution uh, these provisions in the constitution of India. So if these provisions are used by the government of the time, then we cannot say that this is black spot using of such provisions which are a part of your constitution are black spots or black spot. When in 1975 Mrs. Indira Gandhi used these provisions, these were used while taking into considerations the situations that emerged in India at that point of time. And those situations were serious. This is why Mrs. Gandhi has to resort to the national emergency. और फिर जब नेशनल इमरजेंसी जो है वो लग जाती है, तो नेचुरली जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं उसकी जो एक्सरसाइज होती है उसमें भी फर्क आ जाता है। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो पावरफुल हो जाती है, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है उसमें इन्वॉल्व होती है। और
अगर हम आर्टिकल 353 में थोड़ा सा ध्यान दें तो एग्जीक्यूटिव कैसे पावर होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसमें सारा ले डाउन किया गया है। क्योंकि द पर्पस or we can say the object of the government, first and foremost primary duty of the government is to prevent the unity of the country, sovereignty of the country. This is the primary duty of any government. तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए 1975 इमरजेंसी जो है उसको डिक्लेयर करना पड़ा। और मैं आर्टिकल 353 की बात कर रहा था, इसमें आर्टिकल 353 में बिल्कुल क्लियरली इफेक्ट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी जो है कोई भी यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको लगा देती है, उसको प्रोक्लेम कर देती है, तो उसके उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, एंड दोज अफेक्ट्स पोस्ट इमरजेंसी इफेक्ट्स, post proclamation of acts are laid on in Article 353 of the Constitution. मैं इसको पढ़ के बताना चाहता हूँ। While a proclamation of emergency is in operation, then A, notwithstanding anything in this Constitution, the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to any state as to the manner in which the executive power thereof is to be exercised. ये पहला फैक्ट है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सटेंड हो जाती है। वो स्टेट किसी भी स्टेट को कोई भी डायरेक्शन जो है वो दे सकती है। बी, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज with respect to any matter shall include power to make laws, conferring powers and imposing duties, or authorizing the conferring of powers and the imposition of duties on the union or officers and authorities of the union as respects that matter, notwithstanding that it is one which is not enumerated। तो पार्लियामेंट की जो पावर है वो भी एक्सपैंड होगा उसमें। और वो पावर्स हैं किसको और क्या इम्पोज करना है और किसको क्या कन्फर्म करना है यूनियन या ऑफिसर्स या अथॉरिटीज के ऊपर, वो पार्लियामेंट उस कर सकता है। दिस इज व्हाट द इम्पोर्ट ऑफ सब क्लास बी ऑफ द आर्टिकल 350 कि पार्लियामेंट की भी जो पावर है वो एक्सपैंड हो जाती है। नंबर देयर इज प्रोविso to it, provided that where a proclamation of emergency is in operation only in any part of the territory, the executive power of the union to give direction under clause A and the power of parliament to make laws under clause shall
also extend to any state other than the state in which or in any part of which the proclamation of emergency is. This is another expansion of the power of the parliament. So, in nutshell, हम कह सकते हैं कि जब ग्रेव सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है कंट्री में और इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है तो उसके अफेक्ट्स भी होते हैं आपकी लिबर्टीज के ऊपर भी असर जो है वो पड़ सकता है लेकिन ये अफेक्ट जो भी है ये टेम्परेरी है ये कुछ देर के लिए ही जो है वो इमरजेंसी को लगाया जा सकता है ये कोई लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है the moment the situation is improved and becomes normal, then everything, then emergency is over. ड्यूरेशन जो है पहले 44th अमेंडमेंट से पहले 6 months थी it has been reduced to 1 month by virtue of 44th amendment until or unless parliament extends it. This is the legal constitutional position of Article 352 emergency proclamation of emergency. तो ये मैंने बात की जो इमरजेंसी जो है जब हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली इसको इन्वोक कोई भी यूनियन गवर्नमेंट जो वो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली इन्वोक करती है लेकिन आपने देखा होगा कि मैं कुछ और इसके आपको फैक्ट्स इसके बताना चाहता हूँ कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 20 और 21 को स्ट्रेंथन किया गया उसको प्रोटेक्शन जो है वो दी गई और जो ग्राउंड्स थी इमरजेंसी की उसको नैरो डाउन किया गया और कैबिनेट रिकमेंडेशन फॉर इमरजेंसी का जो है उसका प्रोविजन जो है वो ले डाउन किया गया कि amendment mandated that a national emergency can only be declared based on a written recommendation from the cabinet. तो कैबिनेट जब तक रिकमेंड नहीं करेगी नेशनल इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेम नहीं की जाएगी जुडिशियल रिव्यू के बारे में मैंने बताया कि इसको रीइंफोर्स किया गया 44th जो अमेंडमेंट थी इन एसेंस the 44th amendment aimed to reverse the excess of the 42nd amendment enacted during the emergency, strengthen fundamental rights and protect them from arbitrary suspension, ensure that emergency powers are not misused for political purposes, reinforce
principles of democracy and constitutionalism. This was the essence of the 44th Amendment. So, in a nutshell, 44th Amendment strengthened the constitutionality of the Constitution. That too during the proclamation of emergency, when emergency is in operation. हम बात करते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावर्स होती हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो होती हैं और कुछ भी जो है करने के लिए तैयार बैठी रहती है जो यूनियन गवर्नमेंट। आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा लिटिगेशन होती है वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही होती है। उनकी फंडामेंटल राइट्स की सबसे ज्यादा वायलेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वही करते हैं और रिट ज्यूरिस्डिक्शन चाहे वो आर्टिकल 32 हो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स go before the Supreme Court या वो 226 हो where we go to the high courts through the medium of writ jurisdiction. तो अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानना ही बंद कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन भी वहां है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानना बंद कर दे, अपनी मनमानी करना शुरू कर दे, तो उस हालात में भी the power is vested in the Supreme Court to bring such government on the constitutional track. कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत पावरफुल गवर्नमेंट्स होती हैं जिनके पास मोर देन मेजोरिटी है पावर वो इनडायरेक्ट इमरजेंसी जो है वो आपके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं एक ही एग्जांपल दूंगा आपको कि आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन है जो आर्टिकल 19 क्लास ए में इनकॉर्पोरेट किया अगर उसके ऊपर इनडायरेक्ट जो है इमरजेंसी इम्पोज की जाए तो फिर कैसा लगेगा आपको। इसको मैं एग्जाम्पलीफाई करूंगा से फॉर एग्जाम्पल कि कोई गवर्नमेंट है वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज करते हो जो उस गवर्नमेंट को पसंद नहीं है और जो आपका राइट है कॉन्स्टिट्यूशनली तब वो गवर्नमेंट जो है आपको अरेस्ट करेगी एफआईआर करेगी अपनी एजेंसीज के द्वारा हरास करवाएगी कि आपने गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया। जो
कि आर्टिकल 19 ने आपको राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन कि आप अपने आप को आप एक्सप्रेस कर सकते हो फ्रीली। दिस इज योर फंडामेंटल राइट। लेकिन वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आता और आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी वायलेट हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका वायलेट हो, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शंस देता है वो उसकी वायलेशन हो, आर्टिकल 21 की वायलेशन होगी। तो हम कह सकते हैं, we can say this categorically कि ये आपके ऊपर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। ये डिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है, ये अनडिक्लेयर्ड है। और तो I'm sorry, uh, the internet was snapped. So this is अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कि कोई गवर्नमेंट आपको कोई बात ही ना करने दे। इन मुद्दों के ऊपर आपको ये देखना है और यू नीड टू ड्रा ए लाइन between the declared emergency, which is done through the medium of constitutional provisions, and undeclared emergency, which is imposed by those governments
Who doesn't like your views, who doesn't like your criticism about their policies, about their parties, then they resort to such weapons of undeclared emergency. And if you uh, do anything, if you express anything against that government, then you will be procedurally harassed through that government. Such situation is very serious for any country. And then what happens gradually? You lose your fundamental right to speech and expression, which ultimately may impair your thoughts, your personality. So try to make out the difference between the declared emergency and the undeclared emergency. And then see which is fatal for you. I hope you will understand what I wanted to convey to you, and hope you will ponder on this by clearly drawing the difference between emergency imposed in 1975 by Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister, and today, and compare that emergency with today's undeclared emergency on your rights. Thank you. Thank you very much.